क्लियर? उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं, एंड रेस्ट ऑल व्हाट वी आर डिस्कसिंग वो पूरा चैप्टर का जो है स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? बिकॉज आप पहले नहीं थे तो आप वो पहले जो सेंड किया हुआ है वो आप देख नहीं पाओगे, यस मैम। ठीक है? तो वो मैं रीसेंड कर दूंगी आपको, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना, अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन यस भी मैम। कर लेना, ठीक है? और कोई है क्या नया स्टूडेंट? यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा कुलदीप। नो। ओके मैम। एक अली खान है। अली खान, यस अली यस खान। मैम। मैम अभी नहीं है, वो लाइन पे नहीं है, वो गया जयपुर गया हुआ है। अच्छा, नहीं तो अभी फिर अभी एडमिशन लिया है और अभी क्लासेस आप स्किप कर रहे हो तो कैसे चलेगा? आप इन्फॉर्म मैम करो, वो आप अली खान के दुबई कांटेक्ट में निकलेगा। हो क्या? मैम वो आप अली दुबई खान के निकलेगा, ये कांटेक्ट? इसमें मेरा फ्रेंड ही है। अच्छा, आपका फ्रेंड है? वो दुबई निकलेगा ओके मैम ओके। 28 को। तो फिर क्लासेस तो क्या कैसे करेगा, ऑनलाइन ही करेगा? यस मैम, तो कंफर्म करना पड़ेगा उससे आज। नहीं तो ही हैज टू कंफर्म, फिर एग्जाम्स वगैरह हैं, और सपोज फिजिकल क्लासेस वगैरह सपोज गवर्नमेंट जो है परमिट कर देती है तो फिजिकल क्लासेस होने के भी चांसेस यस मैम। है ना? तो लैब वगैरह कैसे करेगा? हम ट्राई करते हैं, आज अभी तो उससे खैर पूछते थे कि उसकी क्या सिचुएशन होती है। हाँ, वर्चुअल अभी तो जो है लैब वर्क भी हो रहा है अरेंज, बट अगेन if he has taken admission then he has to say sorry, he has to stay here only, because if somebody is moving outside the country then यस it मैम। is difficult to return, it is difficult to return at a point of time. यस मैम। Okay, so it's not that much easy. ओके मैम। Okay, fine. Okay, so the Kuldeep, see, Kuldeep has joined newly uh, this BCA class. So, yes, one of you, please, Gaurav Tiwari, you switch on your camera and quickly, within 1 or 2 minutes, tell us that what topic we were discussing in the previous class. Yes, Gaurav. And I have repeated times pointed out that whenever you are asked to speak, you have to speak, okay? And while speaking, you have to switch on the camera. And always do not think that you are sitting at your home or at your some uh, place of comfort, okay? So you can sit in any way. Please maintain a decent dressing also. All these points you have to always take care of. Gaurav, please जल्दी आप start करो, जल्दी से बताइए आप अभी तक हमने क्या Yes, डिस्कस ma'am. कर लिया है? Yes, Gaurav. Yes, ma'am. Yes, speak We out. discussed in last class process of communication. Process of communication. We were discussing about Yes, ma'am. process of communication. Okay. Yes, So ma'am. what discussion we did in that sequence? Yeah, ma'am. Ma'am, first there is sender, then it makes its message and encoding it, Huh? and then it's sent to receiver, and Yes. receiver decoded it Huh? Decodes it. and Okay. give the response. Yes. Give the response. Okay. Fine. So this is the Yes, ma'am. process of communication. This point we discussed in the previous class. Okay. As there are some new students, I think. So I just want to. Yes, students, are you able to see the screen? यस मैम। Yes, Okay, ma'am. fine. Yes, ma'am. So the title you may find here, that is process of communication. Okay, we were discussing about this particular context in the previous class. So I'm just making you to recall quickly what all we discussed. Okay, so see, in terms of process, we discussed that it is a live context. Okay, it is a process. Communication is a process.
Okay, it is nothing constant. Clear? This we need to remember. And what else we discussed, that it is a live context. So if it is a live context, okay, it will go on. Okay, it will always move on, and there will be certain changes, those will be accommodated in this particular process of communication. Okay, changes like changes related to academic status of the people who are communicating, means who are the people communicating, sender and receiver. Okay, these sites could be 1, 2, 3, 4, or many in number. Even the sender could be many in number, even the receiver could be many in number, the receiver could be single in number, it can be 2, 3, 4, 5. Okay, equally the sender could also have the same status. Okay, so what I'm saying is that if communication is a live context, okay, so if it is a live context, there is a state of accommodation of changes all the time. Okay, and the changes are related to the senders and the receivers various type of status. Okay, various type of status, I mean to say the academic status of both the sides. Okay, the social status, the economic status, the emotional status. Okay, and for the purpose these people are communicating with each other. Okay, that also is very much important for the process of communication in between these two sides, sender and receiver. Okay, now message, as it is one of the very important component of communication. Okay, or we can say message is the center point, the center point. Okay, so how it is center point, that sender has to create that, receiver has to receive that. Okay, and accordingly the receiver has to respond for the process of communication completion. Okay, so as message is the center point, so it is also part of communication. Okay, so it also keeps on changing. Okay, how it changes in terms of encoding, in terms of decoding. Okay, हमने previous class में ये point discuss किया था कि it is not necessary at all that there should be 100% understanding exactly, the 100% identification of the message exactly as it has been sent by the sender. Sometimes it happens up to 40% only, sometimes it happens to 50% only, sometimes it happens to 60% only. Okay, as abhi just for example isko मैं explain karungi. In the previous class we were discussing in this topic. Okay, and I asked Gaurav Tiwari that what we were discussing in the previous class, please explain that. Okay, so Gaurav Tiwari explained the maximum information. Okay, he said that we were discussing about process of communication. In that we discussed that sender prepares a message, encodes a message, and that message is received by the receiver, and receiver decodes that message, and accordingly the receiver responds. Okay, so Gaurav Tiwari, we all should clap for him. Okay, clap करो भाई. ठीक है, उसने उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 90% सक्सेसफुल रहा मेरा कम्युनिकेशन क्लास में गौरव तिवारी के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, लेकिन if this could be a state of some of the student, that the student only remembers here remembers this, that yes, process of communication was discussed, nothing else is there in the student's memory. Okay, or he or she is not able to tell. Okay, or slightly if I insist, then only the student is able to recall the sender or the receiver. ठीक है, सिर्फ ये टू साइड्स का जो है वो इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा नाम उसको याद आ जाता है. ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कहूंगी, 40%. Okay, the communication occurred or it happened up to
40% of the expectation. ठीक है? So this is how one has to evaluate. Suppose कोई and if there is a state of some of the student, okay, who is not at all able to recall that what all was discussed in the previous class, okay, not a single word the student is uttering, it means there was no communication. Okay, there was no communication. So we have three states of communication here itself. Okay, no communication, okay, एवरेज कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एवरेज कौन सा? जो 40% सक्सेसफुल रहा, यानी एक दो वर्ड्स तो याद रहे ही, ठीक है, और एटलीस्ट टॉपिक याद रहा कि ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? वेयर द स्टूडेंट इज एबल टू रिलेट all the words, okay, all the terminologies, maximum of the terminologies which were related to this particular topic, okay, exactly as it was discussed. So it was effective communication in terms of that student. Is this point clear? ये समझ में आया ना आपको कि हम जीरो कम्युनिकेशन को, एवरेज कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है. So the point is that in this particular complete discussion we discussed that we have these 6 basic components for the process of communication. Okay, these 6 components will always be there, either directly or indirectly. These will always be there, then only that particular state will be of the category communication. Okay, sender will be there, who will initiate and who will transfer that information in form of message to the other side. Okay, and while transferring this message, okay, the sender will arrange that information in a particular method so that the receiver can decode it, the receiver can understand it. Okay, so all these levels will be definitely performed by the, sorry, these all levels will be definitely present in the process of communication. Okay, so it will start from here. Okay, then this particular step will be done, this will be prepared finally. Okay, then this will be received by receiver and the receiver will do this exercise decoding. Okay, and according to the decoding this receiver will respond. Clear? So this will become the complete, we can say, process or complete way of communication. Okay, if any particular step is missing, that is not there, okay, then there will be no communication. Okay, or we can say the communication will not be that much effective. If some of the part or some of the exercise is missing, then the communication will not be happening or it will not be that effective. Okay, it means the communication will not that much effective. ये हम कैसे जज करेंगे? इससे रिस्पॉन्स किसका? रिसीवर का. आइए बात समझ में आपको? Yes, students, are you getting this point? Yes, ma'am. है ना? तो रेस्पॉन्स जो है, ये रिसीवर का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कम्युनिकेशन की क्वालिटी को डिसाइड कर पाएंगे उसके बेसिस पे. ठीक है, कि इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है या नो कम्युनिकेशन एट ऑल. ठीक है, तो ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्स, okay, it should be there, it should be there. If it is not there, it is not communication.
ओके, तो रिस्पॉन्स की, रिसीवर के रिस्पॉन्स की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स जो है वो फीडबैक नहीं है, यहाँ फीडबैक नहीं है ये। Is this point clear, students? Now I am coming for the feedback discussion also. So that is the reason I am asking you to focus here itself, because in the previous class I showed you some of the diagrams which are available on Google. Okay, and there lot many other terminologies are also included to define process of communication. Okay, so don't get confused. If we are discussing process of communication, then this much is only there. Only these 6 components will be there. Okay, if we are talking about non-effective communication, okay, or barriers of communication, barriers in the process of communication, then we will talk about some other things. ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ये है सिर्फ। इसके बाद जो है इस प्रोसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन इफेक्टेड होगा, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टेड होगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम डेवलप हुआ, ठीक है, फाइनल आउटपुट में, तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टेड है। और ये पार्ट जो है यहाँ पे भी इफ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टेड है। रिसीवर जो है दैट ऑल्सो वेरी मच इफेक्ट्स द कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड इफ ये सारा इफेक्टेड है तो डेफिनेटली ये रिस्पॉन्स तो इफेक्टेड होगा ही, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ ये सारे स्टेप्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, या हम इसको वाइस वर्सा सिचुएशन में देखें कि इफ यहाँ पे इफेक्टिविटी है, 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 तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, इट विल बी इफेक्टिव। ओके, दैट इज द पॉइंट। एंड इफ देयर आर सर्टेन problems at all these levels, then this particular context, this particular part will be definitely affected. This we have to remember. Okay, now student, here itself I am opening a different file. Okay, in that, why the students are so less in number today? What happened? Where is Pragya and all that? Ishwar? Yes, ma'am. Yes, Pragya Sarkar और बाकी लोग कहाँ गए भाई? कल तो करीब 13-14 स्टूडेंट्स थे। I'm hearing the name for the first time. हाँ, I think they are not. प्रज्ञा हमारी क्लास में नहीं है। नहीं तो प्रज्ञा, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रज्ञा बी सेक्शन में है, प्रज्ञा बी सेक्शन में बीटेक में है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वाज आस्किंग, अर्पिता का है, वेयर इज अर्पिता? Don't know, ma'am. Because No idea. continually from past 2 classes I am observing that she is not attending the classes. What happened? And ये बाकी के लोग, कुलदीप और ये लोग कहाँ गए सब? मोहित, okay, fine. So I was telling you about the process of communication. Okay, so in that sequence, I was just a minute. I want to bring out the editing part in that, but I think it's not operated. Let us check this only.
Okay, so now here itself, we will try to clarify what is feedback. Okay, as I mentioned earlier, that feedback is also a type of communication only. Okay, feedback is not the component of communication, it is a complete communication process. It is in itself a complete process. Okay, now see how it will happen. You just check here that for the communication, okay, this particular direction we were following, okay, or one has to follow this particular direction. Clear? A new information will be developed, that will be developed in a proper manner, okay, in a specific manner, and this is the product. Okay, now this particular product reaches to receiver. Receiver tries to identify, okay, try to get it its importance, and then as per the understanding, as per the uh, we can say identification of receiver, receiver responds. Okay, receiver जो है वो respond करता है. Clear? तो ये तो starting का process है. Now what happens, this as per this response, okay, ये जो response है receiver का, ठीक है, this response is observed by sender. Okay, sender observes this response. Is this point clear, students? Whether the response is average one, whether the response is very good one, as I pointed out that Gaurav Tiwari, okay, he effective. I had communication with him in a very effective manner. Why? Because he was able to recall each and every word which we discussed in the previous class. Okay, all the terminologies were there in his memory, and he was able to explain. Okay, that is also the point, that he was able to explain in the very way we discussed. Okay, so that particular response was observed by me. See, in this particular setup of classroom, okay, I am the sender and I am doing this exercise of encoding. Okay, whatever information I want to share, okay, that is the message. Suppose I'm sharing this information, process of communication. मैं आपसे process of communication discuss कर रही हूँ, ठीक है? तो इस मैसेज को डेवलप करने के लिए मैंने एनकोडिंग करी, एंड ये जो मैंने डेवलप किया है, या आपको जो मैंने डायग्राम्स और भी शेयर किए थे, ठीक है, वो सब क्या है, वो एनकोडिंग का पार्ट है. एंड ऑल्सो आई एम स्पीकिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनकोडिंग. ठीक है, सो ऑल दीज things are part of encoding, and final this particular message is developed, okay, and it is transferred to you people. Who is the receiver here in the classroom? The students are the receiver in the classroom, okay, at initial state. Clear? Now you are trying to interpret the information which I am sharing with you people. Okay, you are trying to identify that ma'am ne kya likha hai, which are these words, why these words are written, how these particular words are related to this particular context communication. Okay, further और भी queries हैं brain में, ठीक है, कि suppose यहाँ कोई problem है, यहाँ कोई problem है, यहाँ कोई problem है, तो how this particular situation will be affected. Okay, so it means the receiver is trying to do decoding. ठीक है, आप ये सब exercise कर रहे हो, ठीक है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करेंगे, इस तरीके के सारे पॉइंट्स जो हैं आप वर्कआउट कर रहे हो. ठीक है, नाउ what is happening as per your understanding, as I'm asking questions in between, you people are responding. Okay, or when your exams will be there, you will be responding according to this learning. Okay, or depending on, or even your own efforts will be included in that. Clear? So there will be response, there is response, and there will be response. Clear? तो अब ये आपका response, suppose जो है आप
एग्जाम में अच्छा करते हो, whatever questions are there, okay, you are able to answer those questions up to maximum extent correctly, okay, so that particular response is quite good one, and I am observing, I will evaluate, ठीक है, तो evaluation के form में मैं observe ही कर रही हूँ इस response को. I was the sender at initial state and I am observing this. ठीक है, तो मैं ये जो है ऑब्जर्व कर रही हूं. ठीक है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, ओके, नाउ आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, ओके, in terms of, in relation to this response. Clear? As suppose I find that maximum of the students are sitting silent and only one or two students repeated times speak, they answer in the classroom. Okay, so as I am observing that response of the complete students in the class, okay, and I am also observing that many of the students always sit silent, okay, or those are silent in the class, only one or two, okay, those speak frequently. Clear? So what will happen? I will have certain questions in my brain, okay, that what is the reason, okay, that why the other students are not responding, okay, or the response is not as per my expectation. What is the reason? Is there any problem regarding the language used by me, okay, or is there any problem regarding the students comfort level of that language, okay, or maybe there are some other reasons. The students, many of the students are not having those appropriate infrastructure with them, facility. Infrastructure, I mean to say here, the facilities to concentrate upon. Okay, so the mind is diverting. Clear? So could be many reasons, end of the reason. Clear? Or maybe in the starting days of the college life, okay, students are anxious about many other affairs also. Okay, so that is again one of the reason that the student is not able to concentrate or is not able to understand. Clear? So what will happen? As per my observation, okay, I will develop some requirement, okay, requirement in form of informations. Okay, now what will happen? I will ask the receiver, okay, I will ask the receiver to respond to my questions. Okay, I will ask the receiver to respond to my questions. About the response, see, I am not talking about here message now. ये difference है feedback में और जो initial state का communication होता है उसमें. ठीक है, I am not talking about the message, I am talking about the response. मेरी जो queries हैं या जो sender की queries हैं, अब वो किससे related है? Response से related है. ठीक है, so these questions, अब ये questions जो है या ये queries जो है, इनको भी एक मैसेज फॉर्म में मैंने रिसीवर को दिया. ठीक है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन हुआ. ठीक है, नाउ व्हाट रिसीवर हैज टू डू, ओके, नाउ रिसीवर हैज टू अरेंज द इंफॉर्मेशन. नाउ रिसीवर हैज टू एनकोड हिज और हर आंसर रिगार्डिंग दिस रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये रिसीवर जो है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी पोजीशन की. While answering, मैं कब की बात कर रही हूँ? While answering the questions, receiver will become the sender, okay, and the sender will become the receiver. जो initial state पे sender था, वो receiver
की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और जो रिसीवर था वो सेंडर की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगेन सी, ये सिर्फ पोजीशन हम शिफ्टिंग जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जब ये पार्ट जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये सेंडर ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे the same name will be continued, the same side will be continued. Okay, now we can say that there will be a, we can say, total shift in the position of sender and receiver. Okay, so earlier who was the receiver will become sender later on for the feedback. Okay, and the sender will become the receiver. Clear? Now see, और ये सब किससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं? इस रिस्पॉन्स से रिलेटेड। ये जो रिस्पॉन्स किया था इनिशियल स्टेज पे रिसीवर ने, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अब जो है नेक्स्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो देयर विल बी सर्टेन क्वेरीज, दिस पर्टिकुलर साइड विल encode, the message will be developed, and then the sender will receive, sorry, this particular side which has become receiver now will receive that and try to decode. Okay, and as per that decoding, now the receiver will take some take some decisions of improvement, okay, of we can say of progress, of productivity. Clear? So that will be feedback. वो फीडबैक होगा, ठीक है। कैसे होगा, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फीडबैक जो है वो इनिशियल स्टेट के जो रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड होता है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रिसीवर, इसने अब ये पोजीशन गेन कर ली, तो ये एक्सप्लेन करेगा कि ये मेरा रिस्पॉन्स क्यों ऐसा है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर इनिशियल रिसीवर विल एक्सप्लेन अबाउट इट्स रिस्पॉन्स, ठीक है। व्हाई द रिस्पॉन्स वाज दिस, व्हाई को जो है व्हाई की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा इधर, ठीक है। सो इफ दैट विल हैपन, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ फीडबैक, ओके, and that will help this initial sender to make improvements. So see, in the system of feedback, this is the, we can say, this is the main objective, that people want to make improvement, and that is why they do this feedback process. Okay, nowadays it is very much frequent. If you do online shopping, okay, or if you are doing some academic course online, okay, so there will be some feedback system also. Okay, what that feedback system can contain, what type of information that can contain, that was the content was that content appropriate, was the time comfortable, ये सिंपल से एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और आर यू कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म व्हिच वी हैव यूज्ड फॉर लर्निंग, ओके। तो जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्स होगा रिसीवर का, रिसीवर उसके बारे में जो भी कमेंट करेगा, अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट सेंडर था वो, इफ उसको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पिकअप किया है, ठीक है, तो दैट विल बी सॉर्टेड आउट बाय दिस इनिशियल सेंडर, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, ठीक है, प्रोडक्शन में और जो है उसकी वी कैन क्वालिटी में, नंबर में, ठीक है, सब में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है कोई भी एडिबल प्रोडक्ट है, कोई भी एडिबल प्रोडक्ट है, वो इफ मार्केट में ज्यादा पब्लिक जो है पसंद करती है,
और उनसे पब्लिक से रिपीटेड टाइम जो है मैन्युफैक्चरर जो है ये कमेंट भी शेयर करने के लिए बोलता है, ठीक है, फीडबैक लेता रहता है कि आपको इसमें क्या पसंद है, ठीक है, या आपको ये क्यों पसंद है, तो अकॉर्डिंगली वो अपनी क्वालिटी को उस लेवल पे और अच्छा मैनेज करता रहता है, ठीक है। और फर्दर और भी जो फीडबैक में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो इज टेकन केयर ऑफ बाय द मैन्युफैक्चरर एंड अकॉर्डिंगली उसका बिजनेस जो है वो पॉजिटिवली इफेक्टेड होता है, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक. So this particular point has to be very clear, okay, that feedback is also one of the form of communication only. Feedback is not the basic component. Basic, see, word I am using, you have to concentrate upon that. Feedback is not the basic component of simple process of communication. Feedback in itself is a process of communication. It is one of the process only. Okay, so there also in feedback also there will be sender, there will be some information, and there will be some receiver to receive that information, and accordingly this receiver will respond. Okay, देखिए मैन्युफैक्चरर ने जो सपोज उसने फीडबैक लिया, उसने इंफॉर्मेशन ली कस्टमर से, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उसको पूरा एनालाइज करके, ठीक है, अकॉर्डिंगली क्वालिटी क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट किया, तो वो उसका क्या था, रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो फीडबैक जो है वो अपने आप में कम्युनिकेशन का एक फॉर्म ही है. फीडबैक बेसिक कंपोनेंट नहीं है किसका, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का. ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर कर लो. यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? Ma'am, what is Yes, initial ma'am. है ना. So what is feedback? Feedback is also one of the form of communication. Okay, and feedback always happens after the initial communication. Okay, so that comes next. ये भी एक important feature है feedback का कि it comes next always. Feedback always comes next. ठीक है. And one more point we have to understand here itself, that feedback is not related to criticize anything, okay, or to negatively affect anything. Feedback has the purpose of improvement. Feedback always has the purpose of improvement. फीडबैक को इफ कहीं भी किसी सिस्टम ने इनबिल्ट किया है, ठीक है, तो वो किसी को नेगेटिवली इफेक्ट करने के लिए नहीं किया है, ठीक है, बल्कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के लिए किया है उसको, ठीक है. ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये उसका बेसिक पर्पस है, ठीक है. सो वन मस्ट नॉट थिंक दैट फीडबैक is something negative one. It can harm people. It never harms people. Why? Because it is also one of the form of communication. Okay, certain informations of quality, quantity, okay, and the other aspects of that product, okay, that particular service is collected, and accordingly the improvement or the development is done. Is this point clear? Yes, students, is this point clear to you? ये समझ में आया क्या आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो फीडबैक को मैंने यहाँ पे इसलिए ही क्लियर कर दिया बिकॉज आप लोग जो है वेरियस सोर्सेस को भी अप्रोच करते हो, एंड आई एज अ टीचर हैव ऑब्जर्व्ड एंड गॉन थ्रू सर्टेन टेक्स्ट. ओके, वहां पे आपको ये मिलेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. फीडबैक एक, ये भी एक प्रोसेस है और ये नेक्स्ट प्रोसेस है, और फीडबैक का ऑब्जेक्टिव हमेशा इंप्रूवमेंट का है, प्रोग्रेस का है, ठीक है. इट इज नॉट टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स, इट इज to just identify the limiting factors, okay, and then trying to sort out those limiting factors and making improvements in the performances. Clear? So I think this is sufficient for today.
And if you have any question, you can just quickly come out with those questions. Yes, Ishwar, आपका कोई question है? Yes, ma'am. हाँ, बोलो. Initial response. हाँ? Initial response means. Response means? Ma'am, in feedback, there is some initial response from the receiver. So, what that means? वो communication response जो है, that is the basic component of communication. Okay, so that response completes the process of communication. This is the role of response in communication. Response completes the process of communication. अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया, ठीक है, और आप जो है उसमें से ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो कि मैम रेस्पॉन्स क्या है, ठीक है, या रेस्पॉन्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए. इसका मतलब क्या है? You were attending the information, you were trying to understand the information, okay, and this particular word was slightly difficult for you to understand, or this particular concept was slightly difficult for you to understand, so that is why you are making. So your query making is the response of yours, that is revealing that yes, communication happened, okay, communication हुआ, ठीक है, यानी आपने फर्दर सारी चीज को समझने की कोशिश करी, बट ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है, वो आपका डिफिकल्टी लेवल है अंडरस्टैंड करने का, ठीक है. सो रेस्पॉन्स जो है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है. इसको आपको ऐसे समझना है. रिस्पॉन्स किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंडर एंड रिसीवर्स abilities, their skills, their competencies. Okay, it depends upon that. Yes, are you satisfied with the answer, Ishwar? Yes, ma'am. Yes. Okay, so what we have to finalize here, that response completes the process of communication. If response is not there, okay, that initial response is not there, then the process will not be completed of communication. ठीक है. Okay, इनमें से एक भी मिस होगा. मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट किया कि इफ सेंडर नहीं है कहीं तो भी कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं रिसीवर नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है, सेंडर रिसीवर है तो उनके बीच में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई मैसेज शेयर ट्रांसफर, ठीक है, एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है. इफ मैसेज नहीं है तो भी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है. और एनकोडिंग और डिकोडिंग लेवल पे इफ कोई डिफिकल्टी है तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टेड होगा. रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है. अब वो रिस्पॉन्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी कि वो जो है 100% हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है. इनिशियल स्टेट पे हम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इफ 40% से स्टार्ट होके 100% के बिटवीन है तो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, communication is occurring. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay. Any other question? Gaurav, आपका कोई question है? रोहित, लखन? No, ma'am. No? Rohit? No, ma'am. No? And what No, about ma'am. Lakhan? No, ma'am. No question. You have understood fully. You have understood fully. Huh? And please, students, you ask other classmates of yours that you're not supposed to stay absent in the classes. Previous classes में क्या strength थी आपकी? यही थी क्या? Ma'am, हाँ, 9 to 10. हाँ? Maybe 9 9 to 10. तो अभी कम क्यों है बताइए? Why it is less? ये बताइए. कोई टेक्निकल इशू है किसी का या कोई और प्रॉब्लम है बताइए. आप लोग एक बार अपने क्लास फेलो से आप एक बार बात करिए, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, अदरवाइज यू विल सफर फॉर योर एग्जाम्स. ओके.
Later on, students who are not attending the classes will suffer for their exams. Clear? Okay, fine. And if you do not have any question, then you can leave the meeting. Next time I'll be discussing types of communication. Okay, it is a very important topic, very, very important topic. Types of communication. Okay, and slight information related to process of communication will also be added. Okay, as I continually observed that the strength is very less, so that was the reason I did not started a new thing today. But 1 or 2 times I will take care of. Otherwise, if this will be the continued approach of the students, I will not take care of. I will not think of. I will move in my own pace afterwards. Fine. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Okay. Okay, then you can leave. Have a good day, all of you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.